Hello, myself Priyesh Jha, and I am chemistry faculty of Taxila Model Senior Secondary School, Faridabad. And today I am going to start a new lecture for class 11th. The running chapter for class 11th is some basic concept in chemistry, which is the first chapter of class 11th. And in the previous class we have discussed about the concentration of solution. There are so many terms like molarity, molality, mole fraction, and etc. And today class we will start a new topic, that is limiting reagents, accessing agents, and stoichiometry of the given equation. So the first topic of today is limiting reagent. So generally, what is limiting reagent? So limiting reagents are those reagent which are completely consumed in a reactions, or the reagent or the reactants which are present in a less amount as expected from the balanced chemical equation known as limiting reagents. For example, nitrogen react with hydrogen to form ammonia. So first of all we will balance a given equation, and after that we will calculate the limiting reagents. So for balancing, here should be 3 and here should be this. So this is the balance equation, and according to balance equation the molecular mass of nitrogen 28, this should be 6, and this should be 24 gram. So it is a balanced chemical equation and there is no limiting reagent, because nitrogen should be 28 and it is 28, hydrogen should be 6 and it is 6, and ammonia should be 34, so it is 34. तो यहाँ पे कोई limiting reagent नहीं है. For example, we take nitrogen only 20 gram, but oxygen is also present in a 6 gram. So in this case nitrogen is the limiting reagent, क्योंकि एक बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हाइड्रोजन हमारा 6 ग्राम है तो नाइट्रोजन को कितना होना चाहिए 28 ग्राम, बट है ये कितना 20 ग्राम ही है, कम है. तो कम वाले रिएजेंट को हमेशा जनरली क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट. सो इन दिस केस लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा हो गया, नाइट्रोजन. एंड अनदर रिएजेंट इज ऑल्सो इन अ लिमिटिंग रिएजेंट इक्वेशन, दैट इज एक्सेसिंग रिएजेंट. जो लेस अमाउंट में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो लार्ज अमाउंट में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसिंग रिएजेंट. अनदर एग्जांपल फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, सपोज मीथेन react with oxygen to form CO2 and H2. Here for balance equation this should be 2 and this should be 2, and according to balance equation this is 60 gram, this is 64 gram, 44 gram and 36 gram. तो ये क्या हमारा एक बैलेंस इक्वेशन है. एंड लिमिटिंग रिएजेंट ऑलवेज इन अ रिएक्टेंट साइड. For example, this is 16 gram but oxygen is only 60 gram. तो इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मीथेन हमारा 16 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 64, बट हमारे पास है वो कितने है 6 ग्राम है. तो इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया हमारा, ऑक्सीजन. सो एक्सेसिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, मीथेन. तो हम ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं. ओके, अब क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. फॉर एग्जांपल, और ये भी हमें देखना है, इन एनी रिएक्शन इफ लिमिटिंग रिएजेंट आर प्रेजेंट देन प्रोडक्ट डिसाइड बाय ओनली लिमिटिंग रिएजेंट. देयर इज नो रोल ऑफ एक्सेसिंग एजेंट, ओनली लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स हाउ मच अमाउंट विल बी फॉर्म्ड. तो ये देखना सबसे कंपलसरी होता है कि लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, क्योंकि वही क्या करेगा, प्रोडक्ट हमारा डिसाइड करेगा कितना बनेगा. फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 gives 2NH3. This according to balance equation this should be 28, this should be 6 gram and this should be 34 gram.
if nitrogen is 28 gram but hydrogen is 4 gram, then find out the limiting reagent and the amount of product formed. तो यहां से पता ही चल जा रहा है कि limiting reagent कौन सा हमारा है 6. So here the limiting reagent is 6 and this limiting reagent hydrogen will decide how much amount of ammonia will be formed. So according to balance equation, 6 gram of H2 gives 34 gram of ammonia. So 1 gram of this will give 34 by 6 gram अमोनिया. अब जो लिमिटिंग रेजेंट उसका अमाउंट कितना है 4 ग्राम. सो 4 ग्राम विल गिव्स 34 by 6 into 4 3 2 and this comes out to be 68 by 3 ग्राम अमोनिया. तो इस केस में अमोनिया हमारा कितना बनेगा 68 by 3 ग्राम अमोनिया बनेगा. ओके अनदर एग्जांपल ले लेते हैं. वन मोर क्वेश्चन. 50 kg of N2 react with 10 kg of H2 to produce ammonia. Find out limiting reagent and amount of ammonia formed. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल we write down a balanced chemical equation and after that we will find out first limiting reagent and then amount of product. So N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is the balanced chemical equation. This should be 28 gram, 6 gram, 34 gram. And according to the given data, it is 50 kg. So 50 into 10 by 3 gram because it is in gram. So this should be also in a gram and this should be 10 into 10 power 3 gram. Okay. And in this equation either limiting reagent नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम रूल कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूनिटी रूल. यूनिटी रूल क्या होता है 28 ग्राम ऑफ N2 react with 6 gram of H2. So 1 gram will react 6 by 28 gram H2. So 50 into 10 power 3 gram react 6 upon 28 into 50 into 10 power 3 14 2 7 and this comes out to be 25. So 75 by 3 this comes out to be 10.7 into 10 power 3 gram H2 or 10.7 kg. So for a complete reaction if nitrogen is present in 50 kg, hydrogen should be also present in 10.7 kg, but the amount of hydrogen is only 10 kg. So the यहाँ पे amount of hydrogen होना चाहिए कितना 10.7 kg, but हमारे पास जो हाइड्रोजन की अमाउंट है वो सिर्फ कितना है 10 kg है. तो जो कम वाला होता है क्या कहलाता है लिमिटिंग रीजेंट. सो इन दिस केस लिमिटिंग रीजेंट इज हाइड्रोजन. सो प्रोडक्ट अब फाइंड आउट अमाउंट फाइंड आउट करना है. सो इन एनी रिएक्शन इफ लिमिटिंग रिएजेंट आर प्रेजेंट so only limiting reagent will decide how much amount of product will form. So लिमिटिंग हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है
10 kg, तो 10 kg ही डिसाइड करेगा कि हमारा अमोनिया कितना बनेगा। अब इस इक्वेशन से क्या करेंगे, 6 ग्राम ऑफ H2 gives 34 ग्राम NH3, so 1 gram will gives 34 by 6 gram NH3, so 10 into 10 to the power 3 gram will gives 34 by 6 into 10 into 10 to the power 3, 17 3, and this comes out to be 16.6 into 10 to the power 3 ग्राम और 56.6 kg। तो अमोनिया यहाँ पे कितना बनेगा, 56.6 kg। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और ये तरीका हमारा होता है फाइंड आउट अ लिमिटिंग रिएजेंट। अनदर टॉपिक इज stoichiometry, and this is the last topic of first chapter, and after that the syllabus of first chapter will be complete, and in next class we will discuss a new chapter. So the last topic of this chapter is stoichiometry. So what is stoichiometry? Stoichiometry general meaning to measure, and this represent a balanced chemical equation and the relationship between different component like reactant and product. What is the relationship between mole, mass and volume. So it generally gives an idea about how much amount will be formed and how much amount of reactant will be react, how much amount of how much volume of product will form, how much volume of reactant will react. So it is a numerical portion. For example, CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2. So stoichiometry here, this the coefficient of CH4 is 1, so its stoichiometry is 1, here 2, here also 1, and here 2. So this represent stoichiometry. This means 1 mole, this represent 2 mole, this represent 1 mole, and this represent 2 mole. In the terms of mass, this represent 16 gram, this represent 64 gram, this represent 44 gram, and this 36 gram. तो stoichiometry हमारा जनरल क्या रिलेट किया, 1 mole of methane react with 2 mole of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. Or in terms of mass, we can say that 16 gram of methane react with 64 gram of oxygen to give 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. Or in terms of volume, we can say that 2 liter of oxygens give 1 liter of CO2. There are so many terms which correlate between reactant and product, and the numerical portion comes out to be like this. Question 1. How much amount of methane react with oxygen to produce 44 gram of CO2 after combustion? So first of all, we will write a balanced chemical equation. So chemical formula of methane is 2O2 gives CO2 plus 2H2, and according to balance equation 16 gram
64 ग्राम, 44 ग्राम एंड 36 ग्राम। अब यहाँ पे हमें CO2 कितना प्रोड्यूस करना है, 22 ग्राम, और इसके लिए हमें मीथेन का अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, 44 ग्राम ऑफ CO2 produced by 16 gram methane, so 1 gram produced by 64 by 44 ग्राम मीथेन, और बनाना कितना में, 22। सो 22 ग्राम will 16 upon 44 into 22 means 8 gram. So the amount of methane required for the production of 22 gram of CO2 is 8 gram, or in terms of mole 8 by 16 is equal to 0.5 mole. Okay, so this is the last topic of chapter 1st of class 11th, and next time we will start a next chapter. And for today, thank you.